Get down there! Alright, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Oh, finally! Don't do anything! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Come on! In the back! Come on! Come on! In the back! Hands behind your back! Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Oh, God. Get in there! Sit tight! I'll handle the plastic! Don't blow yourself up! Listen up! M, get these assholes in the closet! In the back! What's he doing? Come on! He's gonna kill us in here. Hurry! Leave us alone. We didn't do shit to you. All set! Phone it in! I'm making the call. All right, we gonna do this? Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. We're just taking the There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. We're done here, let's go! Coming out, B! Give it up! I got him! I saw your face, I'll remember you. You get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes! He's crazy! Fuck! You didn't have to do that! Let's get going! There'll be time for grieving later! Yeah, you got that right. Move! What are you doing? Find some cover. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. So guys, now in this video I'm going to show you how to enable Wineesync mod boost on your Mobox emulator. Okay, so all we need is to copy all these 4 lines and paste it into the Mobox emulator. Okay guys, तो इसको हम लोग यहाँ पे paste कर देते हैं. Then all we need to hit enter, and after that it will automatically install proot package for your Mobox emulator. ये डाउनलोड करना जरूरी है कि हम लोग का Wineesync तभी काम करेगा गाइज. ओके, और हाँ ये गाइज हम लोग के ऑल गेम्स में काम करने वाला. अलग अलग गेम में हम लोग को 10 से 15 FPS मिल जाएगा. लेकिन गाइज जिसका ना एक वो है, मैं तुम लोग को एक मेरिट भी बताऊँगा, डिमेरिट भी बताऊँगा. तो डिमेरिट हम लोग पहले जान लेंगे क्या है इसका. तो यहाँ पहले हम लोग ने इसको डन कर लिया और 400 से 500 KB का ही कुछ डाउनलोडिंग है. उसके बाद डाउनलोडिंग होने के बाद आफ्टर दैट वी नीड टू फोर्स स्टॉप दिस एप्लीकेशन फॉर वंस. ओके गाइज, तो एक बार तो हम लोग को इसको एक बार क्लोज करके कर ही देना है. ओके, और यहाँ पे अगर गाइज तुम लोग का कोई गेम क्रैश कर रहा है तो डायरेक्ट ऑप्शन में जाके ऑप्शन 1 दबा देना. ठीक है, वहाँ पे जैसे मैंने 45 लिखा है तो वहाँ पे 1 दबा देना. रिकमेंडेड 1 है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के लिए 45 है. और यहाँ पे हम लोग ने इसको एक बार टर्मक्स बॉक्स को क्लोज कर दिया. एंड आफ्टर दैट फॉर रनिंग Mobox emulator ऑल वी नीड टू कॉपी एक्सपोर्ट Wineesync टू Mobox. सो कॉपी दीज 2 लाइन्स एंड पेस्ट इट टू द Mobox emulator. तो गाइज वैसे इसका जो है ना ये 2 लाइन हम लोग को हमेशा यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा जब भी हम Mobox रन कर रहे हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइज, जैसे कि अगर तुम लोग के पास ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 तुम लोग रन करोगे, मेरे को पता है सबसे ज़्यादा फेमस गेम यही है, तो तुम लोग यही रन करोगे. तो यहाँ पे गाइज रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि गाइज 8 GB रैम से अगर तुम लोग सोच रहे हो ना कि भाई मेरा प्रोसेसर तो बढ़िया है, 800 सीरीज़ का है, 8 GB रैम है, तो फिर भी गाइज ये जो गेम है अभी प्लेबल नहीं है. 16 GB रैम है गाइज, फिर भी ये वाला गेम जो है प्लेबल नहीं है. तुम लोग अभी किसी के भी यूट्यूब में जाके देखो, सब ने ये या तो 1 मिनट गेम चलाया या तो 2 मिनट गेम चलाया. 3 मिनट में जाते ही गाइस 16 GB रैम है गाइस मेरा, 3 मिनट में जाते ही गेम चाहे जितना भी हो रैम हम लोग का फुल हो रहा है.
16 GB में भी रैम फुल हो रहा है और जो गेम है ऐसे ऐसे लैग मारना स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस यही बोलूँगा कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 रन ही मत करो। जितने भी तुम लोग को दिखेंगे ना अभी जो चला रहे हैं सब सेव गेम फाइल का यूज़ कर रहे हैं और वो भी उनके में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा गेम चल ही नहीं रहा है गाइस। तो वही है कि ये गेम प्लेबल तो है लेकिन वो बस दिखाने के लिए प्लेबल है, वीडियोज़ बनाने के लिए प्लेबल है इस वाले गेम के ऊपर। तो मैंने तुम लोग को जो सच्चाई था गाइस बता दिया। बाकी और सब अंदर प्लेबल गेम्स खेल लो और बाकी वो सब सही है गाइस, ठीक है, जैसे लारा क्रॉफ्ट, टॉम राइडर, वो सब। गाइस GTA 5 अगर तुम लोग खेलोगे तो मैं तुम लोग को पहले ही बता देता हूँ कि स्टोरी 2 में आके GTA 5 कट जा रहा है गेम। ओके, तो तुम लोग स्टोरी 2 से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे जो है गेम में ग्लिच है, मोबॉक्स एमुलेटर हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। इवन हम लोग का 16 GB रैम भी है। तो ये सब लोग तुम देख के करना क्योंकि 60 GB का गेम है और भाई उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हैव अ नाइस डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।